Good morning students, welcome in online classes. My dear students, yesterday we have discussed about that economic exploitation of India. Under these headings we have discussed about that how the Britishers ruin of Indian trade and commerce, how the Britishers imposed heavy export duty on silk and cottons, how the Britishers manufacturers flooded the Indian markets with machine made goods, and how the Britishers forced the Indian traders and to produce the needs of the British manufacturer. Today our topic is in this chapter, means chapter number first, you know very well. In this chapter, today our topic is India was converted into an agriculture colony and ill treatment of indigo cultivator. Students, according to needs of the British manufacturer, the Britishers forced to the Indians to produce only export crops such as jute, opium, indigo, cotton and oilseed. These crops are highly demanded into the British manufactured companies, and the Britishers forced to the Indian, especially Bengal, Bihar and Awadh. You can see in the book. Bengal, Bihar and Awadh became major producer of export crops such as jute, opium, indigo, cotton and oilseed. मीन्स बंगाल, बिहार और अवध में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन पहले से होती थी. मीन्स जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टिलिटी वाली थी और इन चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता था. द मेनी peasants involve himself into the production of the jute, opium, indigo, cotton and oilseed. But before the arrival of the Britishers, the Indian peasant also produced the crops like that wheat, like that rice, like that barley. But after the arrival of the Britishers forced to the Indians to produce only the commercial crops. Okay, thus India was converted into an agriculture colony of England. According to needs of the Britishers, the Britishers forced to the Indian to produce only these crops in their fields. So the farmers suffered, and especially India was converted into an agriculture colony by the Britishers. Each and every productions, those are produced by the Indians, these all are sell out by the Britishers from India to England. So gradually with the time, the life of the peasant was very miserable, and soon the peasant left the farming because they forced by the Britishers to produce only the crops those are used in England. Second and next fourth point, द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर. इंडिगो कल्टिवेटर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ जो व्यवहार था अंग्रेजों का, वो भी बहुत बेकार था, बहुत बैड था. कैसे कह सकते हैं? इफ वी सी दैट पॉइंट नंबर 4, देन वी फाइंड आउट अ न्यू प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1833. अंग्रेजों ने एक न्यू प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन 1833 में. इस प्लांटेशन में ये कहा गया कि भारतीयों को इंडिगो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो थे उनको क्लॉथ में इंडिगो का काफ़ी यूज करना होता था. इंडिगो एक कलर होता था, इस कलर का नील की खेती जिसे हम बोलते हैं. एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कॉमर्शियल एजेंट्स. इंडिगो की खेती कराने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अपने कॉमर्शियल एजेंट्स बना दिए और कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिए बाय द कंपनी. एंड नाउ दे बिगन इन्वेस्टिंग इंडिगो प्रोडक्शन. और धीरे धीरे भारत के हर एक जगह पर वो देखने लगे, चेक करने लगे कि कहाँ पर कैसी कितनी इंडिगो प्रोड्यूस किया जा सकता है. एंड दे आल्सो फोर्स टू द पेसेंट टू प्रोड्यूस ओनली इंडिगो. नाउ द कंडीशन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर वॉज वेरी मिजरेबल. Day by day, the condition of the indigo cultivator was very miserable. Most of the cultivator were in debt trap. Means इंडिगो की खेती करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा और उस लोन में वो काफ़ी कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए. क्यों? क्योंकि इंडिगो की खेती जो होती थी वो काफ़ी लंबा समय लेती थी और इस लंबे समय के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता था. नाउ पेशेंट हु वर इनिशियली टेम्पर्ड
by loans soon realized how harsh the system was. धीरे धीरे लोन के बोझ में दबते चले गए. द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो द प्रोड्यूसर वॉज वेरी लो. और अंग्रेज जब इंडिगो की खरीदारी करना शुरू किए हैं भारतीय किसानों से, तो वो बहुत ही लो प्राइस पर देना शुरू किए. एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड, कंटिन्यू. लोन के बोझ में दबते चले गए और इस साइकिल का कभी अंत नहीं हुआ. एंड डे बाय डे इंडिगो कल्टीवेटर की पोजीशन डाउन होती चली गई. सो दिस इज आल्सो अ वेरी important reason under the economical exploitation of India by the British government. Okay, so there are 2 points. India was converted into agricultural colony. The Britishers forced to the Indian to produce only jute, cotton, opium, indigo and oil seeds. Okay, and second, the indigo cultivator, the position of indigo cultivator was very miserable because they forced by the Britishers to only produce in their fields of indigo, and they also get very low price. So the position of indigo cultivator is very miserable. And now see that point number 6, loss of employment. Day by day, loss of artisan, craftsmen, many of the soldiers, those who are do their work under the princely state. Lakh of the artisan left their job, craftsmen lost their livelihood due to the ruin of Indian industries, which was the result of the British export-import policies, annexation of Awadh and other princely state. Annexation of Awadh rendered their soldiers jobless because they were disbanded by the British with the introduction of English education. Thousands of Pandit and Maulvis lost their work, and the thousands of others feared losing work in the near future. Yes, day by day the employment increases. Many of the Pandit, Mullah lost their work. Many of the soldiers jobless. Many of the artisan craftsmen lost their job due to the ruin of the Indian industries and Indian market. So this is also a very important causes for the revolt of 1857. And last point, drain of India's wealth to England. Yes, भारत का धन कंटिन्यू भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निकाल कर इंग्लैंड सरकार को देती चली गई. इससे भारत अंदर ही अंदर, भारत का जो धन था, संपदा था, रिसोर्सेज थे, अंदर ही अंदर खोखला करता चला गया ब्रिटिश पॉलिसी. सी दैट drain of wealth to England. The English company and other officials carried away India's wealth to England in several way. कई तरह से भारत के धन, भारत की संपदा को हानि पहुंचाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. The company paid 4 lakh annually to the British government in England under a law of the British Parliament passed in 1767 AD. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक छोटी मोटी कंपनी बनकर आई थी एज ए ट्रेडर, वो कंपनी भारत से 400 लाख एनुअली पेमेंट करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को. और ये धन किसका था? भारतीयों का था, इंडियंस का था. नाउ passing by paying the high salaries to the British officials in civil and military administration both in British and princely India, they sent a large portion of their salaries home as saving. भारत के वो सारे सैनिक जो भारतीयों के प्रिंसली स्टेट में अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए थे, भारत के वो सारे राज्य जहाँ पर सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाया जा रहा था, उनका सारा खर्च अंग्रेज भारतीय पैसे से करते थे. सो भारत का धन कहीं ना कहीं, दादा भाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में लिखा भी था कि भारत का जो धन है वो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारत से निकाल कर पूरी तरह से इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर ली है. सो दीज ऑल आर द वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन सिचुएशन इन इंडिया and increases day by day. Finally, this was happened a revolt. This was known as the First War of Independence. My dear students, after that economic exploitation completed, please all of you remember that 4 point necessary that you have to complete it, and 4 point remember each and every headings, very important, like that. Those who are able to understand the point is please be remember. Now again we have discussed about that military causes, and this is the final and last causes of the revolt of 1857. In this topic we have discussed about that how the military causes was responsible for the revolt of 1857. Okay, so please, if any queries or any questions related to the economic causes of the revolt of 1857, so please ask me, my personal WhatsApp number. Thank you.